Hello everybody, and once again welcome to Pankaj the Shillong tutorials. And this is the continuation video of uh, the biology for ICSC 7th grade students. Okay, and this I think is the third part of the video, and the chapter that we are discussing is respiration in plants and animals. Right? Okay. So in the previous video, I had already covered about the cellular respiration that takes place in the human beings. Okay, and I had also covered the respiration in cockroaches and grasshopper in that video. Okay, now in continuation to that only, I'm going to start with today's video. In this today's video, we are going to just revise what we studied about cockroaches and grasshopper, and we'll proceed with our chapter. Okay, so we are into ICSE 7th grade biology, and the name of the chapter is respiration in plants and animals, right? Okay, so in the previous video, as I told you, we ended with how respiration takes place in cockroaches and grasshopper and other insects. And there I mentioned about this. Insects like cockroach, grasshopper, etc. have tiny holes on the sides of their body, and these holes are called as spiracles. Okay. These spiracles are connected to a network of thin air tubes called trachea. Okay, and this trachea, they are further branched, or they are further getting divided into something called tracheoles. Okay, like the nerves, they branch into capillaries in human beings. Same way, trachea will be branching further into tracheoles. These tracheoles, they spread into the whole body of the insect, and the exchange of gases, that is the oxygen and carbon dioxide, takes place by diffusion between the tracheoles and the blood, okay, of the insect. So this is what we studied in the last video, and today we are going to start with something called how respiration takes place in earthworm and leeches. Okay, ये जो earthworm होते हैं और ये जो leeches होते हैं, these are also like small insects. You cannot call them insect, they are in fact reptiles. Okay, तो ये जो reptiles होते हैं earthworm and leeches, इनकी जो skin होती है, that is very very much moist and slimy. Okay, बहुत slippery skin होती है, and इनकी जो skin होती है, that only helps them in respiration. Okay, so the respiratory organ of this earthworm and leeches is mainly their skin, their slimmest skin. Okay, so the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide का जो exchange होता है, that takes place through this slimmest skin of the earthworm and the leeches. Okay, then coming to frogs. Frogs में क्या होता है? Frogs are amphibians. Okay, so they live both in water as well as in land. So whenever they are in water, okay, their respiration takes place through their moist and slimy skin. Okay, तो उनमें respiration skin से होता है, उनकी भी skin बहुत moist और slimy होती है. तो frogs में respiration takes place through the skin whenever they are in water, but all the time frogs will not be in water, they will come on the land also. So when they are on the land, that time the respiration in the frogs takes place with the help of their nostrils and the lungs. Okay, so frogs may you will find lungs as well as nostril for respiration in land, and you will also see that the frogs, they respire through their slimy skin when they are in water. So frogs के केस में ऐसा होता है. Now let us talk about fish and ostrich, जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, अंडर वाटर. तो फिश, ऑस्ट्रिच और दूसरे जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जिनको हमेशा 24 आवर्स ओके पानी के अंदर रहना पड़ता है, उन लोग में रेस्पिरेशन कैसे होता है? बिकॉज इनसाइड वाटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीजन, राइट? इनसाइड वाटर what happens is oxygen is there, but it is in the form of, it is dissolved in water, it is not free oxygen. Okay, air में तो land में तो you can take oxygen from the air. Okay, but what about taking oxygen from the water? So in the case of water, the oxygen has to be taken from the
water which is already dissolved in it. Okay, so वो oxygen absorb करने के लिए, you know, there is a special arrangement which is made in the case of fish and other marine animals, and that arrangement is known as gills, gills. So let us talk about how this respiration takes place in fish. Okay, fish hai, ostrich hai, these are all you know, always underwater, so they have to use the oxygen dissolved in water for respiration. Water is taken in from the mouth and it passes over the gills. So mouth se hai na, fish will take in water, and that water, you know, will pass over the gills. Mouth के बिल्कुल पीछे gills होते हैं. Now, what are these gills? You know, these gills are nothing but, you know, folded extension of skin. Okay, fish की जो skin होती है ना, उसी का extension होता है, but थोड़ा layered, folded layers में होता है ये skin. And you will find a lot of filaments present in the gills. These filaments, you know, they are full of blood vessels. Okay, छोटे छोटे blood capillaries उसमें से run होते हैं. तो ये जो blood capillaries जो है, it keeps the gills always full with the blood supply, right? So what happens when the fish, you know, gulps water into its mouth, that water is rushed over the gills. Gills के ऊपर से जब वो water pass होता है, तो water के अंदर जो dissolved oxygen होता है, वो automatically diffuse हो जाता है blood के अंदर. Okay, where is the blood? Blood is inside the capillaries, gills के अंदर. So the exchange of gases takes place there itself, between the gills and the water. Between the gills and the water, of course, the oxygen is taken in from the water and the carbon dioxide is given out to the water. Okay, this way the exchange of gases takes place in the fish. Okay, so the exchange of gases takes place in the gills between the oxygen in the water and the blood in the capillaries. This is how respiration takes place in fish and other marine animals. Is that clear? Now coming to the last part, that is respiration in plants. Now before I go into this last part, that is respiration in plants, let me tell you that after this video there will be a final video which will be a question answer session, okay, on this particular chapter only, that is respiration in plants and animals. So I'll be covering lots of you know, objective type of questions and short questions and answers and everything, you know, I'll be covering in that video. So in that video, you know, I'm going to just answer the questions without explaining them more in detail, because the concept is already discussed in these videos. Okay, so in the question answer session mein, I will not be giving you detailed explanation, but ये आपको जो concept है, that you will understand from these videos only. Okay, so I just want to remind you that after this there will be a question answer session ka video. Okay, fine. So the last part of this chapter comes here, and that is respiration in plants. Okay, so plants में भी respiration होता है, obviously होगा, because plants भी तो living organism है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ओके, नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ओके, थोड़ा सा, बट देन इसको कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज प्लांट में और एक प्रोसेस होता है विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. नाउ ऑलवेज देयर इज अ कंफ्यूजन और ऑलवेज देयर इज अ मिक्स अप बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ओके, तो ये दोनों चीजों को अगर आप अलग रखोगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मैंने फोटोसिंथेसिस भी डिस्कस किया है, सो दैट यू नो यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू प्रोसेसेस. ओके, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में ये दोनों प्रोसेस आर नॉट द सेम. In fact, they are just opposite processes. Okay, so let us start discussing that. Okay, respiration in plants. जैसे animals में respiration होता है, that is oxygen from the air is taken in and carbon dioxide is thrown back into the atmosphere. The same thing happens in plants also. So in the plants, the respiration, that is exchange of gases, takes place all over its entire body. फर्क सिर्फ इतना होता है कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू नोज एंड लंग्स और थ्रू द स्किन और थ्रू द गिल्स. ओके, सो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रेस्पिरेशन देखा जाता है, बट इन प्लांट्स रेस्पिरेशन आपको
उसकी एंटायर बॉडी में दिखाई देगा। तो प्लांट की एंटायर बॉडी में क्या क्या यू कैन फाइंड आउट लीव्स, यू विल फाइंड स्टेम्स, यू विल फाइंड फ्लावर्स, यू विल फाइंड फ्रूट्स, यू विल फाइंड रूट्स। ओके, तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। तो सारे पार्ट्स जो है वो अपनी तरह से रेस्पिरेशन में पार्ट लेते रहते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मतलब रेस्पिरेशन सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्लांट में ही होता है, नो, द एंटायर प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। नाउ लीव्स में कैसे होता है? इन लीव्स देयर आर टाइनी पोर्स, टाइनी होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, दिस स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा आर वेरी स्मॉल पोर्स और होल्स ऑन द लीव्स, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों तरफ होते हैं। और ये जो स्टोमेटा है, इसके थ्रू, ये स्मॉल होल्स के थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ओके, स्टोमेटा आर फाउंड मोर इन नंबर्स अंडर द लीफ एज कंपेयर टू अपर सरफेस। अपर के सरफेस में, अपर सरफेस पे थोड़े कम होते हैं स्टोमेटा, बट लोअर सरफेस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं स्टोमेटा। Stomata is protected by two bean-shaped cells called the guard cells. हर एक स्टोमेटा, each and every स्टोमेटा में दो बीन शेप के सेल होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स जो है वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इज, जब ये गार्ड सेल्स में पानी बहुत मिल जाता है उसको, तो ये पानी मिल जाने से क्या हो जाता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जब इसका पानी जब सूख जाता है, ये गार्ड सेल्स में से पानी जब निकल जाता है, तो यही गार्ड सेल्स जो है ना वो कोलैप्स हो जाते हैं और अपना जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में ये गार्ड सेल्स का बड़ा हाथ होता है। ओके, सो दिस गार्ड सेल्स दे ओपन अप ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज अप ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा विल बी ओपन और रात के वक्त स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। ओके, तो ये खासियत होती है स्टोमेटा की। नाउ लीव्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस टू स्टोमेटा, एग्रीड, बट स्टेम्स में कैसे होता है? तो स्टेम्स में भी ऐसे ही सिमिलर होल्स होते हैं जिसको हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं, lenticles। दिस लेंटिकल्स यू नो, you will find them all over the stem. Okay, कुछ तो obviously दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते, but throughout the stem you will find this lenticles. Okay, तो lenticles के through भी exchange of gases takes place. So that is how stem में भी exchange of gases always takes place. सेम वे रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स तो सॉइल के अंदर होते हैं। तो सॉइल के अंदर अब आप सोचोगे जैसे फिश का मैंने बोला कि अंडर वाटर रहते हैं वो लोग, तो अंडर वाटर तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो सेम वे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो वहां पे सॉइल में क्या होता है, देयर आर स्पेसेस, ओके, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, स्पेस होते हैं जहाँ पे एयर ट्रैप होके बैठी रहती है। तो वो जो ट्रैप्ड एयर जो होती है सॉइल के अंदर, वहां से जो ऑक्सीजन है वो रूट्स ले लेता है और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ओके, तो रूट्स के ऊपर देयर आर समथिंग कॉल्ड रूट हेयर्स। ओके, और ये रूट हेयर्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम क्या होता है कि वो जो एयर स्पेस जो होता है सॉइल में, वहां से ऑक्सीजन को अंदर ले लेना है प्लांट के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट के बाहर वो सॉइल में छोड़ देना होता है। So this is the work of the cells in the root hairs. Okay, so that is how roots में respiration takes place. Now coming to some special type of roots which are also known as pneumatophores. Okay, let me spell it. It is Neumatophores, pneumatophores. ये न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं, these are the roots of certain water plants. जो प्लांट्स नॉर्मली वाटर्स में, वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, उनके रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ना, दे राइज अप, दे कम अबव द वाटर लेवल फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। ओके, तो ये रूट्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग करने के लिए दे कम अबव द वाटर लेवल, ओके, फॉर ब्रीदिंग। ऐसे रूट्स जो है वो उनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। एंड सच प्लांट्स यू विल फाइंड इन मार्शी एरियाज like Sundarbans in the West Bengal. Okay, such pneumatophores are also called as breathing roots. तो इनको in general breathing roots भी बोला जाता है, because these roots, you know, they clearly function for breathing only. Okay, so apart from this,
the last part now of today's session is the difference in respiration in plants and animals. Okay, and of course we are going to study photosynthesis and respiration also. Now respiration, you have seen, it takes place in plants, it takes place in animals. Okay, now both दोनों में difference क्या हो सकता है, plants में और animals में respiration में, what is the difference? So the difference is what? First let me tell you what is similarity. Both plants and animals, they take in oxygen from air and they release carbon dioxide in the air. Okay, तो दोनों का exchange of gases is similar. They take in oxygen and they release carbon dioxide, both plants and animals. But what happens in plants is, the plants में ये जो process है respiration का process, वो ज़्यादा slow है compared to that in the animals. Okay, तो animals में respiration थोड़ा fast है, but plants में respiration is slower compared to the animals. Okay, that is first point of difference. Second is, in plants respiration takes place all over its parts. Okay, तो plant में जो respiration है वो throughout its body, all over its parts, leaves में, roots में, stem में, flower में, हर जगह पे respiration takes place. But in animals, you know, the respiration always takes place only through specific organs like nose and lungs. Okay, that is another difference. Third difference is, in the plants जो food होता है, जो nutrition होता है, वो plant खुद बनाता है. Okay, the plant, they prepare their own food by a process called photosynthesis, isn't it? तो plant में जो respiration का process है, that is oxidation of the food. So oxygen is taken from the atmosphere, and the food, जो plant का food जो होता है, जिसको oxidize करना होता है, that is already prepared by the plant only. एनिमल्स में क्या होता है, फूड भी बाहर से लेना पड़ता है उनको और ऑक्सीजन भी बाहर से लेना पड़ता है. तो दोनों चीजें बाहर से लेकर रेस्पिरेशन में दोनों चीजें रिएक्ट होती है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस, 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल्स का रेस्पिरेशन. Now coming to photosynthesis and respiration. Now these two, photosynthesis and respiration, are two opposite processes found in plants. Okay, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, आई हैव डॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स क्लियरली फॉर यू. फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड बाय द प्लांट्स. तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, एंड वो जो बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, now photosynthesis में what are the raw materials needed? So the raw materials needed are carbon dioxide and water. So plants को अपना food बनाने के लिए जो raw material चाहिए होता है, वो होता है carbon dioxide and water, which is taken from the atmosphere by the plants. Okay, carbon dioxide को atmosphere से लिया जाता है, water को soil में से लिया जाता है. Is that clear? So photosynthesis में जो raw material होता है वो होता है carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. अब ये जो फूड है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है, दैट इज रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन जो चाहिए प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, सो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो रेस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, दैट इज ऑक्सीजन, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, नाउ इन फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपेंस इज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये प्लांट लेता है. ओके, एंड देन इट आल्सो टेक्स सनलाइट. ओके, सनलाइट में से इट टेक्स ऑल द एनर्जी, एंड प्लांट के लीव्स में देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर with the help of sunlight and the chlorophyll, it undergoes a chemical reaction which is known as photosynthesis reaction. And in the process what happens is glucose and oxygen is formed. So the product होता है photosynthesis का, वो होता है glucose and oxygen. Glucose is nothing but the food. Okay, so the food which the plant can consume, it can use, is known as glucose. तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नाउ रेस्पिरेशन में व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज द नॉट द प्रोडक्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज द reactant. Okay, or you can say glucose and oxygen are the
रॉ मटेरियल्स, ओके, रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनता है वो आपस में रिएक्ट होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। ओके, नाउ एनिमल्स में द रेस्पिरेशन जब होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट प्लांट्स में इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। along with this carbon dioxide and ethanol कुछ ATP molecules भी बनेंगे। ATP molecules are nothing but they are representing energy। okay, so ये जो ATP molecules यहाँ पे बनते हैं along with carbon dioxide and ethanol, this happens in respiration। so you can see clearly over here photosynthesis में जो product होता है वही respiration में reactant होता है। okay, so that is the big difference। okay, photosynthesis and respiration में नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो फोटोसिंथेसिस है इट टेक्स प्लेस पर्टिकुलरली इन द लीव्स। ओके, व्हाई? बिकॉज लीव्स में जो सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड क्लोरोफिल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये जो क्लोरोफिल है इसकी जगह होती है क्लोरोप्लास्ट में। So chloroplasts are the cells, or the chloroplasts are the place in the cell where this photosynthesis takes place। Respiration कहाँ पे take place होता है? Respiration happens in the mitochondria। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर respiration होता है। So again the difference in photosynthesis and respiration is this। कहाँ पे होता है? Photosynthesis chloroplast में होता है and respiration mitochondria में होता है। okay, another big difference is energy is absorbed। photosynthesis में energy absorb किया जाता है sunlight से, the energy is taken in photosynthesis में। respiration में energy is released in the form of ATP। okay, so ये एक बड़ा difference है photosynthesis and respiration में। ठीक है, and the last but not the least is in photosynthesis it takes place only during daytime because sunlight की जरूरत होती है, sunlight के बिना photosynthesis is not possible। so photosynthesis cannot take place during the night time। तो photosynthesis सिर्फ रात के वक्त दिन के वक्त होता है, रात के वक्त it is not possible। but respiration में ऐसा कोई restriction नहीं है, तो respiration will take place all time in the day as well as in the night। okay, so these are the differences between the photosynthesis and respiration, which are very much, students, they, they mix up, they just get confused between the two। but मैंने मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझा दिया है what are the differences। now this was all about the concept of this particular chapter, respiration in plants and animals। this was from the 7th grade curriculum level। okay, ये कुछ चीजें जो है जो हायर लेवल में दोबारा यू विल बी विजिटिंग। ओके, so that I have not discussed because I am sticking myself to only the 7th grade curriculum ICSE right now। okay, so this is all about respiration in plants and animals for the 7th grade, and in the next video, as I told you, I'll be coming up with some question answer sessions on the same chapter, same topic। okay, so till then, goodbye, take care all of you, see you